Welcome to Circle of Clarity. Yes, thank you for joining in on a Saturday morning. Okay, what are we meeting today for? We are going to discuss masterclass on hospital sector in India. Yes, this session is going to help you understand the whole space in a much simpler way. Yes, I'll be assuming that no one comes from any working knowledge of the whole sector, and let's understand everything from a very first principles basis. Okay, a short disclaimer that nothing that we'll be discussing is a buy or sell recommendation. We'll be using a lot of hospital names, listed company names, but it is in no way a buy or sell recommendation. सो गाइस एक बहुत सिंपल चीज है, पहले थोड़ा स्टैट से स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू स्टैटिस्टिक्स which will help you understand what is this whole space about. Okay, hospital sector na earlier the Indian healthcare was dominated by government hospitals, charitable trusts, missionary institutions and small doctor-owned nursing homes. Okay, so in the 1960s 70s ना hospital एक सेक्टर के जैसे व्यू नहीं होता था. Okay, no one looked at hospital as business entity or a profit making entity. वो approach वो mindset ही नहीं था. Okay, healthcare was seen more as a social service than a scalable corporate business. तो mindset shift हुआ. Okay, धीरे धीरे 1983. Okay, a major turning point came in 1983 when Apollo Hospitals introduced the corporate hospital model in India. उसके पहले तक क्या था, इट वाज ऑल अ सोशल सर्विस. तो दिस इज द होल ओरिजिन द हिस्ट्री कि पहले 1960 70s में हॉस्पिटल वाज सीन एज अ नॉर्मल सोशल सर्विस. ओके, गवर्नमेंट इन्वॉल्व ज्यादा है. Now in 1983, Apollo hospitals, private hospital, there were a lot of restrictions also. Okay, private players cannot open a hospital more than X number of beds, कुछ 300 beds or something. So there were a lot of rules. But 1991, the liberalization happened. Okay, LPG came. So 100% FDA eligibility मिल गया hospitals को later. So in the 90s, okay, private players were allowed to enter the hospital space, and this changed the whole dynamic of the sector. तो अगर आपको सेक्टर का टाइमलाइन देखना है, earlier, as I said, government and trust led hospitals थे. ओके, 1983 में जैसे सर अपोलो ने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का होल कॉन्सेप्ट, एंड देन प्राइवेट चेन्स एक्सपेंडेड आफ्टर द लिबरलाइजेशन. Okay, so these all things have started, and obviously जैसे जैसे टाइम जा रहा है. ओके, दिस सेक्टर इज बूमिंग. अभी इसका पहले वैल्यू चेन समझता. ओके, आई एम होपिंग द फर्स्ट पॉइंट, सी देयर आर 10 पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस होल स्पेस. ठीक है, ये पूरा हॉस्पिटल सेक्टर है ब्रोकन इट डाउन इनटू 10 सिंपल पॉइंट्स. पहला क्या था, द ओरिजिन. एज यू गाइस अंडरस्टूड, ओरिजिन क्या था. ओके, दिस सेक्टर डिड नॉट एग्जिस्ट 100 years बैक. वो गवर्नमेंट और ट्रस्ट वाले करते थे, और कोई नहीं करता था. ओके, लेटर ओके, द माइंडसेट शिफ्ट हैपेंड एंड पीपल अंडरस्टूड कि हॉस्पिटल से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो. दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस पॉसिबल. तो ये उसका पूरा सेक्टोरल टाइमलाइन है. नेक्स्ट इज वैल्यू चेन. अभी वैल्यू चेन समझो बहुत सिंपल है. वी कैन यू नो द होल हॉस्पिटल का वैल्यू चेन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 सिंपल पार्ट्स. पहला होता है प्राइमरी. प्राइमरी मतलब प्राइमरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लेट्स से गाइस, let's assume that I am going through maybe cold, fever. So what will I do? My practicing doctor है, clinic में जाऊंगा. He'll prescribe me some medicines and I might consume those medicines, might get treated in couple of days. ठीक है, so basic चीज है, हॉस्पिटल तक जाता ही नहीं, the first point of contact. तो प्राइमरी हो गया यहाँ पर. ठीक है, दिस इज द प्राइमरी. यहाँ पे हॉस्पिटल इन्वॉल्व ही नहीं होता, आपके लोकल क्लिनिक्स आपको हेल्प कर लेता है. यस, सो द प्राइमरी केयर इज द फर्स्ट स्टेप. देन आता है सेकेंडरी केयर. सेकेंडरी केयर में क्या आता है, सेकेंडरी केयर में आता है बेसिक सर्जिकल कैपेबिलिटीज, कॉमन सर्जरीज. जैसे गाइस, मैं क्रिकेट खेलने गया एंड लेट्स से समथिंग हैपेंड, आई फेल डाउन एंड मेरे को फ्रैक्चर हो गया. सो दैट फ्रैक्चर, ओके, फ्रैक्चर कैसे वो करना है, उसका पूरा ट्रीटमेंट वो सेकेंडरी में हो जाएगा. सेकेंडरी लेयर ऑफ ट्रीटमेंट, सेकेंडरी केयर. देन यू गो टू द टर्शरी केयर. अगर कुछ बहुत एडवांस्ड, for example, someone's going through cancer treatment, oncology cancer, cardiac मतलब heart issues. Okay, so ये वाले जो सर्जरीज होते हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, that comes into tertiary care. So primary care, secondary care, tertiary care, and now India is also doing quaternary care. Quaternary care क्या होता है, बहुत ही एडवांस्ड. ये हर हॉस्पिटल में ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होता. यस, एक्सट्रीमली अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होंगे, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वगैरह, रोबोटिक सर्जरीज होंगे. यस, ऑल दीज आर क्वाटरनरी केयर्स. एंड देन ऑब्वियसली
पैरेलली ये चार के पैरेलल चलते हैं समथिंग कॉल्ड एज एंसिलरी सर्विसेज। डायग्नोस्टिक है, रिपोर्ट्स निकलवाना है, फार्मेसी है, रिहैब है, डायलिसिस है, एम्बुलेंस है, ब्लड बैंक है, ऑल दीज आर सपोर्ट सर्विसेज। तो अपना पूरा हॉस्पिटल का वैल्यू चेन आई एम होपिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, तो ये अपना वैल्यू चेन हो गया पूरा हॉस्पिटल स्पेस का। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये अगर स्पेस समझना है, कोई भी इंडस्ट्री समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू ड्राइवर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेवेन्यू ड्राइवर्स के ये इंडस्ट्री में एक कंपनी पैसा कैसा कमाता है, हाउ डू यू अर्न मनी इन दिस इंडस्ट्री। ओके, अगेन वेरी सिंपल, यू कैन डिवाइड दिस इनटू 5 पार्ट्स। ओके, हाउ डज अ हॉस्पिटल अर्न मनी? देयर आर 5 एग्जैक्ट वेज इन विच हॉस्पिटल कैन अर्न मनी। पहला पॉइंट, ओके, आईपीडी, इसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब पहले तो इन पेशेंट आउट पेशेंट का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, वेरी सिंपल, इफ यू स्टे इन द हॉस्पिटल ओवरनाइट, ओवरनाइट स्टे करते हो, इन पेशेंट हो गया। आउट पेशेंट मतलब सुबह गए, छोटा सर्जरी है, ओके, सम स्मॉल सर्जरी, और मे बी जस्ट अ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन और 1 डे सर्जरी, मतलब कुछ किया, सिस्ट निकाला, शाम तक यू गेट अ डिस्चार्ज, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इफ यू स्टे ओवरनाइट इट बिकम्स इन पेशेंट, इफ यू स्टे मतलब अगर आप वही दिन जाके वापस आ गया, आउट पेशेंट। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? यस। हॉस्पिटल का 70 to 80% रेवेन्यू इन पेशेंट, majority revenue comes from IPD. So their main revenue, usually the core economic engine is the inpatient. Inpatient में क्या होता है, रूम का रेंट लो, आईसीयू में रहे तो ओटी का जो भी चार्जेस है, नर्सिंग, इम्प्लांट्स, प्रोसीजर का पैकेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर, तो ओपीडी क्यों करता? ओपीडी इज वेरी फुटफॉल हेवी। सो 80-85% फुटफॉल्स, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट 10 to 15% ऑफ देयर रेवेन्यू। उतना भी नहीं होगा शायद इन ए जनरल हॉस्पिटल। तो क्यों करते हैं? बिकॉज इट फीड्स फ्यूचर एडमिशंस। समझा? यू विल हैव गुड डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग इन योर हॉस्पिटल। ओके, कोई आया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ओके, डॉक्टर विल कंसल्ट, तो ओपीडी में आओगे, डॉक्टर विल कंसल्ट, बोलेगा आपको सर्जरी का जरूरत है, सो इट विल फीड टू द आईपीडी डिपार्टमेंट। आईपीडी को धंधा कैसे मिलता है? ओपीडी से मिलता है। सो इवन दो ओपीडी is attributing to a very lower revenue, but footfall ज्यादा होता है, so OPD acts as a feeder to IPD का revenue. So hospital cannot ignore OPD also. इवन तो ओपीडी से कम पैसा कमाता है, उसका रेवेन्यू बहुत शेयर कम है, बट इट एक्ट्स एज अ फीडर टू योर आईपीडी, सो इट्स इंपॉर्टेंट। थर्ड इज डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक तो सबको पता है, यस, कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन्स वगैरह उनके पास ही होता है इन हाउस। सो उससे क्या होता है, उनका द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इंप्रूव्स, देयर असेट यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट इंप्रूव्स, एक्सेट्रा। करेक्ट। तो डायग्नोस्टिक एक तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है। फोर्थ फार्मेसी है। When you visit a hospital, visit as in you're admitted in hospital, doctor will tell you these medicines you have to bring. तो हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे, सम फ्लोर पे देयर बी अ फार्मेसी, वहां से ही आप ले लोगे। सो जनरली दे सेल एट अ मार्कअप, तो दे अर्न फ्रॉम दिस एज वेल। यस, फार्मेसी, लेट्स से आपका कोई सर्जरी है, सो द नर्स और द डॉक्टर विल नीड सम ग्लव्स, सो देयर आर फ्यू कंज्यूमेबल्स, दोस कंज्यूमेबल्स आर आल्सो बॉट फ्रॉम द फार्मेसी, so they earn from this as well. And the fifth is the others residual category. जैसे big hospitals will have cafeterias, so cafe से कमाएंगे। Ambulance services है, let's say you have went through a big surgery, तो you need physiotherapy for the next couple of months, so physio है, rehab है, health checkups है। These are other services, which is the fifth and the last revenue stream. So these are the 5 ways in which a hospital earns money, broadly 5 ways. तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया guys? First, how has the hospital space evolved? Origin, the background. Second, we understood कि उसका वैल्यू चेन कैसे है, उसको 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया हमने। थर्ड, 5 डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। करेक्ट, ये रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। फोर्थ इज द टेलविंड्स। टेलविंड समझता? यस, टेलविंड मतलब ग्रोथ कैसा है, टेलविंड। टेलविंड मतलब व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ओके, विच आर द रीजंस व्हाई दिस सेक्टर माइट डू एक्सट्रीमली वेल। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पे। पहला तो गाइस समझो, लो बेड डेंसिटी इन इंडिया, ओके, क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल रनवे फॉर कैपेसिटी क्रिएशन। डब्ल्यूएचओ बोलता है फॉर एवरी 1,000 पीपल, 1,000 लोगों, एवरी 1,000 पीपल के लिए एटलीस्ट 3 मिनिमम 3+ बेड्स होने चाहिए। इंडिया इज एट हाफ, 1.5 1.6 रफली। द लास्ट सर्वे दैट वाज टेकन, 1.6 बेड्स ऑलमोस्ट फॉर 1,000 पीपल। तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी ऑलमोस्ट 50% पे हम वर्क कर रहे हैं। यस। सो इंडिया में नंबर ऑफ बेड्स इज गोइंग टू इंक्रीज, फर्स्ट थिंग, बिकॉज द बेड डेंसिटी राइट नाउ इज लो, सो दिस विल एक्ट एज अ टेलविंड फॉर द सेक्टर। सेकंड, राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अभी ना, when we got independence,
एंड ड्यूरिंग 1940s 50s 60s, जो भी डेथ्स होते थे अपने कंट्री में, मेजोरिटी ऑफ द डेथ्स वर ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीजेस। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है, तभी डेथ उसकी वजह से ज्यादा होते थे। बट राइट नाउ द कॉज ऑफ डेथ हैज चेंज्ड guys. Majority deaths nowadays is happening due to NCDs, non-communicable diseases. 70% of almost deaths, almost 70% of deaths are due to non-communicable. Non-communicable मतलब diabetes, cardiac arrest, cancer, kidney disease, etc. etc. तो सर उससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इट एक्ट्स एज अ टेलविंड फॉर द सेक्टर। व्हाई? बिकॉज ये सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इसमें यू नीड कॉन्स्टेंट ट्रीटमेंट्स। डायबिटीज है तो उसका एवरी 6 मंथ्स 1 ईयर चेकअप होगा, उसके मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। कैंसर तो यू नो यू हैव टू सर्जरी होगा, फिर कीमोथेरेपीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर द प्रोसेस। सो दीज डिजीजेस, ओके, create a lot of revenue. Non-communicable diseases create utmost amount of revenue for the hospitals. Third, aging demographics. I'll tell you a stat. By 2030, over 12% of Indians will be 60 plus. So obviously, right now India is a very young demographic country, but we are becoming old day by day. So by 2030, over 12% of our country will be senior citizens, 60 plus. And obviously, 60 plus लोगों को ज्यादा hospital का requirement होता है. Yes, so more revenue for the hospitals. Correct. So ये एक है, out of pocket share in overall health spending has fallen over time. Correct. So all these things you have to keep in mind कि सेक्टर ग्रो करेगा कि नहीं। ये सेक्टर ग्रो करने के लिए बहुत सारे टेलविंड्स है। अभी डू यू नो, रिसेंटली रिसेंटली मतलब फ्यू इयर्स बैक आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया है, जिससे 55 करोड़ पीपल हैव 5 लाख का कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज ऑफ विच नाउ द लोअर क्लास पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड गोइंग टू हॉस्पिटल्स आर नाउ गोइंग टू हॉस्पिटल्स बिकॉज दे हैव हेल्थ इंश्योरेंस। करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ टेलविंड। नेक्स्ट, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है गाइस, मेडिकल टूरिज्म। इंडिया में जो सर्जरी का कॉस्ट है, ओके, और यूएस में सर्जरी का कॉस्ट है, उसमें 5-10 टका का डिफरेंस नहीं है। ओके, उसमें 90% का डिफरेंस। सो इफ अ सर्जरी लेट्स से bypass surgery let's say would cost 1 crore in US, it will cost around 10-15 lakhs, 10 lakhs in India, even in the best of facilities. So in India the surgeries happen at a fraction of the cost. So even if they have to travel, that is cheaper for them. Yes, तो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री 4 साल में डबल होने वाला है। 4 years the industry is going to be, it's a $1 billion industry. So what I'm trying to say is कि medical tourism is also very very big. Correct. तो ये सारे tailwinds हैं। Okay, obviously when there is a tailwind there is also a headwind. Okay, what are the risks that this sector is facing? सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है ये है गवर्नमेंट प्राइसिंग इंटरवेंशन। मतलब सर ये नहीं समझा। गवर्नमेंट लव्स टू इंटरफियर इन दिस इंडस्ट्री। यस, एक एग्जांपल देता हूं मैं। ओके, स्टेंट बिठाना होता है पता। ओके, पीपल हैव दिस इशू, कोरोनरी स्टेंट होता है। 2017 फेब में, ओके, दे कैप्ड द प्राइस कि स्टेंट का प्राइस इतना ही रहेगा। हॉस्पिटल यूज्ड टू चार्ज अ लॉट, दे सेड नहीं, स्टेंट लगाने का यही प्राइस है। सो गवर्नमेंट से इससे आप चार्ज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हर्टेड रेवेन्यूज ऑफ अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स। करेक्ट। सो अगर गवर्नमेंट, इफ द सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, गवर्नमेंट कौन के नजर में आ गया, गवर्नमेंट कैन कम एंड से कि यू कैन नॉट चार्ज लेट्स से 15 lakhs से ज्यादा फॉर अ स्पेसिफिक सर्जरी। सो जो प्रीमियम कमा रहे सारे हॉस्पिटल्स, इट विल गो फॉर अ टॉस। ठीक है, तो ये हेड हुआ नहीं है, बट देर आर सिग्नल्स दैट दिस माइट हैपन, और इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, माइट हैपन इन द फ्यूचर, माइट नॉट हैपन, वी डोंट नो। यस, गवर्नमेंट स्कीम्स कैन सपोर्ट ऑक्यूपेंसी, बट होता क्या है गाइस, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस इफ यू गो, ओके, फॉर अ ट्रीटमेंट, उससे क्या होता है, हॉस्पिटल अर्न्स लेस, बिकॉज गवर्नमेंट नेगोशिएट करता है, पैकेज मांगता है। ठीक है, तो ये एक हो जाता है। डॉक्टर, नर्स एंड स्पेशलिस्ट स्कैरसिटी, एक स्टैट था, आई फॉरगॉटन के नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया कितने हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन यूएस पर पर थाउजेंड पॉपुलेशन। सो इंडिया में डॉक्टर, नर्सेज, स्पेशलिस्ट जो सर्जरी करने वाले लोग हैं, बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। यस, सो अगेन दिस इज अ हेडविंड, दिस इज अ बॉटलनेक फॉर अस। ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टार डॉक्टर्स, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस, ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल। सो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस, आप समझो ये हॉस्पिटल का सेक्टर वर्क कैसा करता है। जैसे लेट्स से, इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, फीस पहले लेते लोग एंड देन सर्विस देते। यस, मनी कम्स फर्स्ट, सो द वर्किंग कैपिटल इज नॉट ब्लॉक। But in case of a hospital, it is more like a hotel sector. Hotel समझता ना, hotel से easily you can compare. You have to first buy a piece of land, okay, make your building, make high-end hospital
बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग यू मेक, ओके, हाई कैपिटल इंटेंसिव, बहुत पैसा लगता है स्टार्टिंग में, एंड देन यू विल स्लोली स्लोली स्टार्ट रिकवरिंग द मनी. सो टू मच मनी इज ब्लॉक्ड इनिशियली, दैट इज अ प्रॉब्लम. यस, हाई कैपेक्स है. सो ग्रीनफील्ड मतलब वही, ग्रीनफील्ड मतलब नया लैंड लो, पूरा खुद से बिल्डिंग बनाओ. सो इट कैन टेक years to stabilize, which can depress margins and rookie. Working capital stress can become serious when payer mix shifts towards insurance. Yes, इंश्योरेंस TPs, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस.